We are discussing the question answer. We are discussing it. And if you know the answer, you can just raise the hand. You will not say, ma'am, I'll say. Just raise the hand only. You go at the back. Understood? So the first question, bete, which of the following can be beaten into thin sheet? Yes. Ishani? Riti. Zinc, very much right. I have to remember the names now. So, Riti said zinc, it is very much true. Which of the following statement is correct? All metals are ductile. All non-metals are ductile. Generally, metals are ductile and some non-metals are ductile. Yes. All metals are ductile. Is mercury ductile? Called. Sit down. Yes, book says that all metals are ductile. But let us think over it that does mercury is ductile? We are thinking, we're discussing. I am not giving any answers. We are only discussing it that we can't say that all metals are generally. We can say C, isn't it? Next page. So this is the filling the blanks. I think you can do yourself. I am starting with the fifth question. This is your homework, third and fourth. Okay? No discussion. You will discuss only with me. Now, fifth question, you have to classify or write the properties. So first property is appearance. So metals आपको कैसे नजर आते हैं नॉन मेटल? ये रिदम फिर बोल रहे हो. Our metal doesn't exist in liquid. Gallium always exists in liquid state. I am asking you, does gallium always exist in liquid state? Or it melt on a palm? Next is hardness. Next is hardness. Yes, last. Then what are non-metals? If metals are hard, you are right, metals are hard. Then the non-metal doesn't, they don't are hard, then what they are? Sulfur is not hard. I'm just asking you, sit down where you sit. This is not a test going on. Again, we are discussing it. And as you know that now test will be conducted offline in your classes only. And for online student, we will share the screen only. I think now the new test schedule says on Wednesday. Wednesday. Yes, bete. Sulfur is not hard. Parthiv, stand up from there. Come here. कोई बात नहीं, साइड पे करके बैठ जाओ. Yeah, you are very much right. But metals are hard, generally hard, and the non-metal exists in liquid, solid, and all the state. And solid state में भी इतने hard नहीं है, पर exception है ना diamond हमारे पास. We have exception diamond, that is the hardest form of the carbon. That is a non-metal.
ठीक है, यू आर वेरी मच राइट। अगर जनरली डिफरेंस देखें तो मेटल्स आर हार्ड, नॉन मेटल्स आर नॉट, बट यू मस्ट बी अवेयर विद एक्सेप्शंस. They can cut with the knife. Then malleability. Metals are, yes. So metals are malleable and non-metals are non-malleable. Same is the property of ductility. Then heat conduction and conduction of electricity. Yes. And to electricity too. Can you give me the exception of non-metal which can conduct electricity? Graphite. So graphite is a non-metal that can conduct electricity. Otherwise, सारी properties हम कह सकते हैं metals में होती हैं, non-metals में कोई भी property नहीं होती. Hard भी वही है, malleable भी metal है. अगर general अगर मैं thick करवाना हो आपको तो metals ही ductile हैं, metal ही electricity conduct कर रहे हैं और metal ही क्या करते हैं, heat conduct कर रहे हैं. So all of the things are done by metals. So the next question is, aluminium foils are used to wrap food items. Only 2 hands are raising. Others are not aware of it. Yes. Why aluminium foils are used to wrap the food item? You have aluminium foil. Why you use it for wrapping the food item? Yes, Rida. Then you will wrap the food item if it is a good conductor. We wrap it because they are malleable and they can be converted into thin sheets and they are not reactive as much. So you can write down the aluminium. We use aluminium to wrap the food items as it is malleable and it doesn't react with the food. ठीक है, it doesn't react. अगर कॉपर है वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा. कोई अचार लेके आओगे, कभी आप नींबू पानी बना के देखना कॉपर की वेसल में, तो आपको बहुत गंदा गंदा टेस्ट आना शुरू हो जाएगा. तो मम्मा कहेंगे पता नहीं किसमें बना के ले आए, कभी बनाना. वाई? क्योंकि कॉपर एक रिएक्टिव मेटल है, इट विल रिएक्ट. नेक्स्ट इज इमर्शन रोड्स of heating liquid are made up of metallic substance. Yes, last. Then because the metal are good conductor of heat, so the immersion rods get heated up. When the immersion rods get heated up, the water will get heated up. So you can write down metals are good conductor of heat and electricity, and thus immersion rod get heated soon when current is passes. So immersion rods will be heated soon when the current is passed. Okay. So next is copper can't split zinc from its salt solution. Again, the 3 hands are raising. What are the next? Do Akshin stand up? Stand up. Yes, tell me why copper can't split zinc from its salt solution. Let him try. Yes. You have done बेटे reactivity series. कॉपर कहाँ होता है? जिंक के नीचे. रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या किया था? जो ऊपर है सीरीज में वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव.
So you can say a metal can displace always less reactive metal. Okay, sit down. A metal can displace a less reactive metal from its salt in aqueous solution, but zinc is more reactive than copper. Thus, copper can't displace zinc from its salt. Okay, क्या समझ आई? Stand up. जानवी, what's your name? नाम याद करना. जानवी. Stand up. जानवी, क्या समझा इसमें? फिर reactive कौन है फिर? Zinc. Sodium and potassium are stored in kerosene. Again the same, the and the reason. Yes, Saksham, try it. D part. Sodium and potassium are stored in kerosene. Just try it. जोड़ दे दिमाग पे. Yes, you can do it. Yes, Hariom. Hariom. Yes, stand up. Next, what's your name? Naman. Naman, stand up. Just show me your face. Yes. सक्षम को मम्मा से बांध के रखते हैं ऐसे कि अपनी जगह से हिले ना. क्यों? सोचो क्यों बांधेंगे मम्मा? वैसे हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में हम डाल के रखते हैं. जैसे सक्षम को पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि सक्षम हवा का झोंका है ना. सक्षम हवा का झोंका उड़ जाएगा इधर से उधर. मम्मा को पता भी नहीं चलेगा. वो पढ़ने के लिए बिठाया होगा और सक्षम है ना. सक्षम. यस. Yes, it is very reactive. They are very reactive. Why we store in the kerosene? Kerosene provide inert atmosphere. See? And if we will not store in the kerosene, oxygen will be available. Then it will catch fire. वैसे सक्षम के ऊपर आंख ना रखी जाए, इसका शैतानी दिमाग जाग उठता है ना. सक्षम. सिट डाउन. वो तो मेटल है. सक्षम तो अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता है कि नहीं. नॉन मेटल बनने की कोशिश कर. फॉस्फोरस ना बनियो. सक्षम फॉस्फोरस नहीं बनना. आयोडीन बन जाना. आयोडीन. आराम से एक जगह पे बैठ जाओ सॉलिड स्टेट बन के. कैन वी स्टोर लेमन पिकल? यही है. कैन वी स्टोर लेमन पिकल इन द एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन. बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड पिकल एज एन एसिड, लाइक विनेगर एसिडिक एसिड होता है. ठीक है, समझ आ रही है. एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस. सो एल्यूमिनियम इज अ मेटल and pickle does have acid. Generally जो चार बनते हैं वो एसिडिक एसिड में बनते हैं. ठीक. You will not do the formula as such because formula will be so difficult for you. Okay, so you should know. अभी घर पे मम्मा को चार रखते हुए देखा होगा. इधर प्लास्टिक या बर्नियों में आता है. पहले तो बर्नी में बनता था,
मगर आजकल वी आर लेजी इनफ कि वो टूट जाएंगे, बच्चों से बचा के रखने होते हो, तो मम्मा प्लास्टिक के डब्बों में डाल देते हैं, ये प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करेगा. What happened when dilute sulfuric acid is poured on the copper plate? Eighth is again question for you, the homework one. अक्षित, अगर कॉपर को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे कुछ होगा? टेल मी, स्टैंड अप. You have written the activity series. Where is your activity series? Just open the notebook. Acetate. पूरा फॉर्मूला बेटा एसिड मिथाइल होता ही है. You will understand in the coming classes. You will not write as such. Yes, you have opened the activity series, Akshit. Copper is above or below the hydrogen in reactivity series? Yes. Below. The copper is below. Can it displace the hydrogen? So is there any reaction with dilute sulfuric acid? No. It means when you will pour dilute sulfuric acid on copper plate, there will be no reaction. There will be no reaction, as copper is less reactive than hydrogen, as it lies below in the reactivity series. Yeah, no reaction you will write. There will be no reaction as copper lie below in the reactivity series than hydrogen. So it can't displace hydrogen from sulfuric acid, can it? Now iron nail are placed in copper sulfate. Iron nail, what equation? This is iron nail are placed in copper sulfate. Now tell me, iron is more reactive than copper or less? So it will undergo displacement reaction. So now you will form iron sulfate and copper. Or otherwise FeSO4 you have already done. Yes, you can write. As they have written iron, that is why I have written iron. Saloni took a piece of burning charcoal. सक्षम एक सलोनी लड़की है जिसने एक पीस ऑफ चारकोल ले लिया. ठीक है, पीस ऑफ चारकोल मीन्स कार्बन ले लिया. चारकोल किसकी बनी हुई है? कार्बन की. ठीक है. नाउ क्या किया इसने? अब बर्निंग चारकोल. बर्निंग चारकोल का मतलब है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है and it is forming carbon dioxide and it is giving heat. If they are saying that burning charcoal means carbon is reacting with oxygen and giving you heat and carbon dioxide. Now उसके बाद उसने क्या किया? कलेक्टेड द गैस इवॉल्व. तो गैस कौन सी निकली? कार्बन.
तो उसने ये कलेक्ट कर ली. ओके, सो व्हाट विल शी फाइंड द नेचर ऑफ द गैस. सी, कार्बन क्या है, नॉन मेटल, उसकी ऑक्साइड क्या होगी, एसिडिक. तो नेचर ऑफ द गैस विल बी एसिडिक. क्या उसको बेटे टेस्ट ट्यूब मिलेगा, उसमें पानी डाल दिया जाता है, या वेट लिटमस पेपर ले आते हैं. If you bring wet litmus paper near carbon dioxide, it will turn blue to red. Dry litmus paper doesn't affect. या तो आपका सॉल्यूशन होना चाहिए या लिटमस पेपर वेट होना चाहिए. वेट लिटमस पेपर लेके आओगे. कभी भी आप ड्राई लिटमस पेपर लेके कोई रिएक्शन नहीं होगी. ओके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में जाके कार्बोनिक एसिड बनाएगी. ठीक है, दिस इज व्हाट कार्बोनिक. देन दिस कार्बोनिक एसिड विल टर्न ब्लू लिटमस. इफ वी डोंट हैव वाटर, तो जब आप वेट लिटमस पेपर लेके आते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाती है, and then color is changing from blue to red. Got it? You have to complete the notebook till tomorrow. No, tomorrow is too early. You have 3 days to complete it. Yes, offline check होनी है, अब जो आ रहे हैं. One day Rita went to the jeweler shop with her mother. एक Rita है, she went to a jeweler shop with her mother. Her mother gave an old gold jewelry to the goldsmith to polish. Rita की mother ने, she has given the gold jewelry to the shopkeeper to get it polished. लिख लो बेटे, है यहाँ पे. Next day they bought the jewelry back. They found that there was slight less in its weight. Can you suggest a reason for the loss of the weight? No, gold को rust नहीं होती. No. इसको किसमें किया बेटे? Listen to me carefully. See, gold and platinum are the noble metals. They don't react with the acid as such. ठीक, वो कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते. They react with aqua regia. अब ये ना, अगर आप गांव वगैरह में चले जाओ ना, गली गली में आते हैं कि आपके पास ना गोल्ड के कंगन हो पुराने, हम अभी नए करके दे देंगे. एंड यू नो दैट गांव वाले जब बहुत पहले बहुत चल पड़ा था ये, तो दे वर हैविंग अ सॉल्यूशन. उन्होंने क्या करना, उस सॉल्यूशन में डिप करना और बाहर निकालना और वो चमक उठना. एंड द लेडीज वाज वेरी हैप्पी कि मेरा तो 2 मिनट में. And what actually they are doing, they are dissolving, they are dipping the gold ornaments in aqua regia. It is a solution in 3:1 of concentrated HCl and HNO3. ठीक है, वो उसमें डिसॉल्व हो जाता है, तो दिखता नहीं है. उसके बाद उनको टेक्निक लगा के उनको वापस एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. तो उसने क्या किया, उसने एक्वा रीजिया में डाला. इसमें डाला एक्वा रीजिया. योर एनसीईआरटी डजंट हैव दिस. Surprising. It is बेटे 3:1 of concentrated HCl
and concentrated HNO3. तो उसका जो ऑर्नामेंट्स है वो किस में डाले गए? एक्वा रीजिया में। तो एक्वा रीजिया में डाल के ना डिसॉल्व हो गया। ओके, जब उसने मान लो ये बेंगल है उसको डाला गया तो आउटर लेयर है जो वो डिसॉल्व होगी। तो अगर आउटर लेयर गंदी हुई पड़ी थी गोल्ड की और इनर लेयर साफ थी, अब घर पे भी अगर आप आउटर लेयर साफ कर दो अंदर तो चमकता ही है। Two to now Karan are coming. So got it? And match of the following and rest of the stuff. This is homework for you. Now listen to me carefully. On Wednesday you will be having the test of the same. As previously you are getting set A and B. Again you will be getting set A and B in the test class itself. Listen to me carefully. The student who have given the consent form for the offline classes will not be allowed to give the test online. They have to give the test online, and if you are giving the test online, the test will not be checked. And the student sitting online, the screen is shared with you either of one set. They have to attempt one set, either I will share they are sitting in their home zone. Okay? So, new schedule says day after tomorrow. Now write the name bete who are present in this class. पेयर को अभी भी सारे कर लो, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह छोड़ के। प्रॉपर्टी से स्टार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन से। Now write down the roll numbers who are present. Roll number 2, 7, 8, 14, 15, 40 and 22. From question number 5 to 11. Now next chapter we will be going to start. They are synthetic fibers and plastics. The bell is out by which time? Yes.